नमस्ते। मेरा नाम दीपक है। आप किताबवाला देख रहे हैं। ये किताबों से जुड़ा हमारा दूसरा सबसे चमकीला सेगमेंट है, क्योंकि अब आप रोज किताबी बातें में भी हमसे जुड़ते हैं। वहां भी हम हर रोज एक किताब के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। किताबवाला में हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अपने मेहमानों को, हमारे ऑथर्स को उनको इन्वाइट करें, उन्हें दावत दें और उनकी किताबों पर उनके विमर्श से थोड़े बेहतरीन तरीके से वाबस्ता हों, उसे अच्छे से समझ सकें और अपने भीतर कुछ गुन सकें। आज ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल की महीने की सबसे सुंदर तारीख है 14 तारीख। तब हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ये उनकी जन्मतिथि का महीना है। हम आज बाबा साहेब के जीवन की यात्रा को टटोलेंगे और इस टटोलने का सिरा बना है एक किताब, क्योंकि किताबें ही तो सबसे सुंदर सिरा है जिसके तहत जिसके धागे को पकड़कर आप बहुत बड़े कॉटन के पूरे उस खदान में घुस सकते हैं। मेरे पास है बिकमिंग बाबा साहेब, बर्थ टू महाड 1891 टू 1929। इसे आकाश सिंह राठौर जी ने लिखा है। आकाश जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं। स्वागत है आकाश जी आपका। शुक्रिया कि आपने किताबवाला के लिए, द ललन टॉप के लिए आपने अपना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आकाश जी अंग्रेजी भाषा में बहुत दक्ष हैं, तो जहां जहां वो अपनी हिंदी में थोड़ा बोलने का प्रयास करेंगे और जहां जहां वो अंग्रेजी आएगी तो उस तरह मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद में करता रहूंगा। बिकमिंग बाबा साहिब 1891 टू 1929। मैं कुछ सवाल आपसे 1929 के बाद के जीवन पर भी लूंगा, भले उसकी किताब आने में वक्त लगे। आपने जब आप बाबा साहेब के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, तो इतनी सारे, एक तो अंबेडकर जी की खुद की लिखी हुई बहुत सारी किताबें भी उपलब्ध हैं, है ना। फिर अंबेडकर पर बहुत सारी किताबें आती रही हैं, तो एक नई किताब की जरूरत कैसे लगने लगी आप? There have been only two very significant biographies of BabaSaheb. Many books have come, but only two are very important. One is by Dhananjay Keer and one is by Kharmode. यानी धनंजय कीर और खैरमोंदे की ही दो किताबें उपलब्ध थी अब तक? हाँ हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोनों। जी। All later biographies have relied either on Keer or on Kharmode. So English speakers, they read Keer. Marathi speakers, they read Kharmode. Every Marathi biography relies on Kharmode. Every English biography relies on Keer. So many books are there, but actually at the bottom, there are only two books. So I have discovered that both of these books have problems, factual problems, problems of the narrative description. So I felt it necessary to bring out a fresh biography, fresh research, so that we don't continue to rely only on Keer and Kharmode. They were written 70 years ago, 70 years. अच्छा, 70 बरस पहले दो किताबें जो अंबेडकर पर लिखी गई थी, उनमें तथ्यात्मक और उनमें इंटरप्रिटेशन की, यानी कि जिसकी हम एक अवधारणा बनाते हैं, उसमें त्रुटियां थी। तो आपने वो कंटिन्यू ना हो, वो उसकी लगातार पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आपने एक नई किताब लिखने का मानस बनाया। मैं इस किताब की यात्रा पर आऊंगा, और आपने इस किताब में ही दर्ज किया है कि आपने 10 बरस का समय लिया इस किताब को लिखने में, इस किताब के शोध में, इस किताब के अनुसंधान में। 10 इयर्स के इस पूरे टाइम पर आपने किन किन सोर्सेस पर आपने रिलाई किया है? आप कहाँ कहाँ गए? आपने कैसी ये किताब उन अलग किताबों से डिफरेंट है जिन सोर्सेस का इस्तेमाल खैरमोंदे या खीर की किताबों ने किया था? एक पाठक के रूप में मैं ये समझना चाहता हूँ। I have visited in many countries all of the archives. Ambedkar was in the United States. तो आर्काइव्स है न्यूयॉर्क में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आर्काइव्स है, वॉशिंगटन डीसी में आर्काइव्स है। In London, Ambedkar was at University of London, London School of Economics, or Gray's Inn for law studies. In addition to this education, so University of London, London School of Economics, Gray's Inn, there's also India Office Library in London. So I've been to all of these archives. Keer and Kharmode, they never visited these archives. Of course, was not possible for them.
For me, अच्छा, it was possible. ये वो So, जगह है विश्व की जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद वो गए हैं, या जहां उनके काम का एक तरीके से इम्पैक्ट रहा है, जुड़ा रहा है उनका काम इन जगहों से? हाँ. अच्छा, Then also, same principle. Wherever BabaSaheb has gone, I've gone to check the archives. This includes Delhi, Pune, Mumbai, Nashik, Mahad, Nagpur. So in each of these places, there are some documents, some evidence. These were these were available to Kir and Kharmode, but they did not always use the documents that were available to them because they had personal acquaintance. So they thought, I will simply ask BabaSaheb and I will know the answer. Ye problem hai ki Ambedkar actually, he did not regard it as important to remember each of the things that he accomplished. So even relying on Ambedkar as a source for the biography of Ambedkar is problematic. Sounds strange. अम्बेडकर, हाँ ये बहुत अद्भुत आपने बात कही हाँ, कि ये अगर अजीब आपको है, लेकिन अम्बेडकर की जीवनी लिखनी है तो आप अम्बेडकर के बोले या लिखे पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, पर्टिकुलरली जो उनके अपने जीवन के बारे में उनकी टिप्पणियां हैं. yes, and nobody knows this. I have established this. I have evidence. Dr. Ambedkar wrote some pages of an autobiography, जिसका नाम है Waiting for a Visa. आपने सुना है? Okay. Waiting for a Visa में there are the date that Ambedkar says he was in New York City is the wrong date. The date that Ambedkar says he was in Baroda is the wrong date. The duration that Ambedkar said he lived in Baroda is the wrong duration. Now, why? Because it doesn't matter to him. He's writing Hindu code bill, he's writing books, he's working on constitution, he's acting as a lawyer, he's leading political parties. For him, it's not important what date was I there, what date was I here. So BabaSaheb was not interested in these small issues, but the biographers, they relied on him for all of these small issues. So all of these things I had to correct. तो इसलिए चूंकि आम्बेडकर मतलब हिंदू कोड भी लिख सकते हैं, आम्बेडकर बहुत कठिन दुरूह किताबें लिख सकते हैं, पर अपनी जिंदगी के बारे में जो ईयर्स हैं छोटे मोटे, कि वो कब किस साल गए, कहाँ साल कौन सी जगह पर रहे, कितने बरस तक रहे, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कायदे की स्थिति नहीं थी इसके बारे में वो बहुत याद रखें या उस पर बहुत ज्यादा अपना ध्यान दें. Yes. अब मैं इस किताब के 3 पहलुओं पर सबसे पहले आना चाहता हूँ. आम्बेडकर की पीएचडी डिग्री को, यानी डॉक्टर की जो उपाधि हम बड़े गर्व से कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपने लिखा है कि वो 2 बार विदेश गए, 2 बार वापस आ गए हैं. उनकी पत्नी उनसे पूछ रहे हैं कि अब भी कोई डिग्री पढ़ाई के लिए वापस जाएंगे आप, तो फिर वो उसमें चुहल से मना करते कि अब नहीं मैं जाऊंगा. तो अम्बेडकर और पीएचडी डिग्री में कितनी कठिनता आई, अम्बेडकर ने पीएचडी की डिग्री कैसे प्राप्त करी? So interestingly, also Kir and Kharmode have this information completely wrong. So Ambedkar, when he went to New York 1913 to 1916, he acquired master's degree. Then he started PhD, but he did not finish, he did not complete. He went to London from New York directly without a passport, as I think you know. जी, In वो London, प्रकरण भी आप बता दीजिएगा जरा. इसके बाद पहले आप in London, he also did not complete PhD. He started second master's degree. Then he returned to Bombay. When he returned to Bombay, everybody believed he returned as Dr. Ambedkar. But this is not correct. अच्छा, जब वो लंदन से वापस बंबई आते हैं, ये कौन से साल की हम बात कर रहे हैं? This is 1917. अच्छा, तब हम जब हम बात कर रहे हैं तो तब 1916-17 की हम बात कर रहे हैं. अच्छा,
तो तब लोगों को लगा कि वो अम्बेडकर जो है जब वो लंदन से आए हैं तो वो पीएचडी की डिग्री लेकर आए हैं, पर ऐसा दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया था। हाँ, तो एक सेलिब्रेशन था बॉम्बे में when अच्छा। Ambedkar came from London. हम्म, Celebrate Ambedkar's education. हम्म, Big function. Ambedkar did not attend the function because he did not have the PhD. अच्छा। So, but Keir and Khair Modi, they do not understand academia. This is one benefit of my personal benefit. I understand because I'm a professor. How does MA work? When is MA given? How is PhD given? These things have not been known to other biographers. So every other biography, a footnote है इसमें, listing every biography, showing the wrong date for MA, PhD, गलत title भी लिखा है, date is wrong. So I have to carefully document PhD was given at which date for which work. And this I have carefully documented. Complicated to explain now in 1 minute, but you can see in the chapters how मैं I उस पन्ने को यहाँ दर्शा दूंगा अपने दर्शकों के लिए। हाँ. तो आखिर में फिर पीएचडी कब मिल पाई डॉक्टर साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर? So he had the first, which was called a Doctor of Science in Economics, that was awarded in 1923. And then the second from Columbia University, called PhD, also for economics, was awarded to him in 1927. So, two PhDs here, but nothing given in 1916. Kharmodi says 1916 में मिला, ये गलत है. 1923, number 1, 1927, number 2. 1923 और 1927 में उन्हें पीएचडी मिली। अम्बेडकर के जीवन पर जब आप इसमें लिखते हैं कि वो एक समाज समता संघ बनाते हैं, उसमें बाल गंगाधर तिलक के जो छोटे बेटे हैं वो उसमें साथ देते हैं। महाड़ सत्याग्रह के बारे में जरा हमारे दर्शकों को तफसील से तसल्ली से आप बताएं। अभी अभी मार्च बीती है और आपकी किताब बर्थ टू महाड़ तक जाती है, उसके बाद का उनकी डेथ तक का भी अंक आएगा, उनके परिनिर्वाण तक का। महाड़ सत्याग्रह अम्बेडकर के जीवन में, उस वक्त के समाज के जीवन में कैसे महत्वपूर्ण था? So Mahad, I wrote this book until Mahad, and 1 or 2 years, later, before Roundtable Conference, coming in 1930, 31. I wrote it to Mahad because BabaSaheb changed because of Mahad. Mahad changed Dr. Ambedkar. It changed his personality. It changed his thoughts, his ideas, changed the way he spoke. You can even see Bombay Legislative Council mein, he always spoke in a sharp, direct way. But he was not cynical. He was not cynical. After Mahad, there was so much violence. The violence of Mahad, which Dr. Ambedkar experienced, as I document also. महाराष्ट्र के एक जगह है जहां पर हम ये कर रहे थे। जरा महाड़ के बारे में पूरा कॉन्टेक्स्ट में बताइए, क्या हुआ था महाड़ सत्याग्रह? अच्छा. So the Mahad Satyagraha or Mahad conference came about because of the access to drinking water. So untouchables, Dalits, scheduled castes, depressed classes, they were called, were not permitted to drink from the public water sources. मतलब एक तालाब था, उसमें से पानी पीने की अनुमति नहीं मिल रही थी। कथित तौर पर जिन्हें माना जाता है कि वो समाज के निचले तबके से आते हैं, जिन्हें शेड्यूल, उस वक्त क्या शब्द था सर? डिप्रेस्ड क्लासेस. Depressed classes, yeah. Okay. So depressed classes were not permitted to drink from the water source, but by law, they were permitted. It was by custom, because of untouchability, that they were prohibited by upper caste. Savarna Hindus did not permit them to drink. So there was a satyagraha where the Dalits or the depressed classes exercised their right to drink, their legal right to drink from the public water source. अच्छा, कानूनन अनुमति थी लेकिन सामाजिक अनुमति नहीं मिली थी, मतलब नहीं दी जा रही थी इसको तरह से. Yes. Now, untouchable has a right to use the road, public road. Untouchable has the right to use public institutions. So they also have the right to draw from public well, funded by government. But the social custom was that if they drink from this lake, they will pollute
the lake. It would be polluted. अच्छा, And अगर ये then, पानी पियेंगे यहाँ से दूषित मान लिया जाएगा, इस तरह की हाँ, मानसिकता थी। और ये हाँ, 1927 की बात कर रहे हैं। हाँ. जी। So BabaSaheb leads a march to the Chowdhury tank in Mahad. चावदार तालाब था जो। जी। And he draws water and he drinks water from this with his own hand. And others follow him. अच्छा, वो एक मार्च अंबेडकर का जाता है, उसमें लोग हैं और वो जाकर के वहां से फिर पानी लेते हैं। हाँ. अच्छा। पानी पीते हैं अपने हाथ से, अंजुलि भर करके अपने हाँ, ओक में। जी। हाँ. So then the Savarna Hindus in the Mahad town, they have a riot. They start beating the untouchables. They start throwing rocks at Dr. Ambedkar. अच्छा, हमला हुआ डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों पर, हाँ, पत्थरों से और मिट्टी से और जो भी उस वक्त हाँ, था वहां हाँ. पर। They hospitalized many of Ambedkar's colleagues. Rajboj, who worked with Congress and Gandhi also, he was in the hospital, almost suffering death. So, because the only thing Ambedkar was doing was exercising a right, and yet the violence was so brutal, so bloody. This made him understand that just passing a law is not going to be sufficient to solve problems. His belief that you could fix the social problems, social evils in India, in Bombay, through legislation in the Bombay Legislative Council, Legislative Assembly. He understood this is no longer true. So this experience of Mahad, the first time that Ambedkar does direct action, satyagraha, first direct action, this transforms the way that Ambedkar thinks about the future of law, of politics, of society, of Hinduism. अंबेडकर की खुद की समझ में बदलाव आया है महाड़ सत्याग्रह से। चावदार तालाब, जहां से पानी पीने की अनुमति डिप्रेस क्लास को नहीं थी, वो मार्च लेकर जाते हैं, हमला होता है, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, इनकी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और उसके बाद अंबेडकर, जो उस वक्त की बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं, उनकी से समझ और विस्तृत होती है। वो अलग तरीके से सोचने लगते हैं जाति की समस्या की रणनीति के मामले पर। And so this is why I end the book, volume 1, at this moment, because we have a new Ambedkar now. So in volume 2, we will see how does this new Ambedkar, from roundtable conference to constituent assembly to conversion, how does this all fit in with his personality, his newfound attitude about law, politics, society, culture, religion. अच्छा, ये आपके अगले अंक में, जो इस किताब का अगला अंक आने वाला है, इस बरस के अंत तक हम उम्मीद कर रहे हैं, वहां पर। अच्छा, मैं कुछ 2-3 सवाल और पूछ लेता हूँ। अंबेडकर के बचपन में हमें जरा लेकर चलिएगा, क्योंकि ये मैं बिल्कुल उत्तरार्ध तक चला आया था। अंबेडकर के बचपन में क्या हुआ है, कैसा था उनका बचपन, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या था? So Ambedkar's childhood is unique because it has on one side untouchability, exclusion, humiliation, deprivation. On another side, it has pride, education, enlightenment of his father and their family. And the mixture of these two things creates the occasion for Ambedkar to understand the situation he is in, but have resources for overcoming that. And why this is so. So untouchability widely practiced in the areas of Maharashtra where he grew up. He was not permitted to sit inside the classroom. He was not permitted to take water like other students. When पानी पीने की अनुमति नहीं थी, साथ में बैठने की अनुमति नहीं थी, और ये स्कूल की बात की जाती है। हाँ, he was not permitted to enroll in Sanskrit. He was forced to take Persian. So many humiliating experiences. But his father's family was army family. So coming from the army, it's a British army at this time. People are treated as equal. So the father studied to bachelor's level in English.
he could speak English. Part of why Ambedkar's English was so beautiful, because his father would teach him, don't use this word, you use that word. अच्छा, पिताजी इंग्लिश सिखाते थे उनको। हाँ, कि वो ब्रिटिश सेना में रह चुके थे तो उनको अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था, वो दक्ष थे उस भाषा में। Exactly. So they are poor, they are outcast, they are excluded, can't get a haircut, can't go to normal shops. All of this is there, but they have pride, military pride. They know how to fight. They know how to be proud of their strength. They know that victory is important and avoid defeat. They know to struggle. And they have the benefits of the British Army, which is education, literacy, and a feeling of equality in the army. So ye dono mila ke, you get the Ambedkar's childhood. Many negative, many positive, creating unique possibility for Ambedkar to take control of his destiny. अंबेडकर की डेस्टिनी में कई दुख बंधे थे। मसलन उनके जन्म के 5 बरस बाद, अगर 1891 को उनके जन्म का वर्ष माना जाए, क्योंकि आपकी किताब में ये बात लिखी हुई है कि कई जगह 1800 मतलब वो खुद एक खत में लिखते हैं शायद कि कुछ लोग 1891 में जो उनका पासपोर्ट है उसमें 1893 या 2 दर्ज है, कई और से कुछ और डॉक्यूमेंट है, लेकिन 1891 को हम मान के चलते हैं। उन 5 बरस बाद उनकी माँ की मृत्यु होती है, उनके पिता दूसरी शादी करते हैं। तो बंबई क्यों जाना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर अपने बचपन में? So in this age, he was very frustrated. The main cause of frustration was public and social. He was treated different. But his father remarried because he was not able to take care of the children on his own. And the woman he married was wearing Ambedkar's mother's jewelry, his mother who had passed. अच्छा, तो जो उनकी दूसरी पत्नी थी रामजी अम्बेडकर की, जो अम्बेडकर जी के पिताजी थे, वो उनकी माँ की, अम्बेडकर की जो दिवंगत माँ थी, उनकी गहने पहन रहे थे। Yes. अच्छा, और ये बात अम्बेडकर को नागवार गुजरती है। Yeah, this angered Ambedkar, and he was frustrated. And the normal idea of untouchable, let's say, untouchable achievement or some kind of advancement was to work in Bombay textile mill. अच्छा, अपने आप को, अपने स्तर को बेहतर करने का पैमाना था कि आप बंबई में जाकर काम करें उस जमाने। That's right, because you leave the village, you go to the city, you become a factory worker, you have an income, you are independent. This was for young Ambedkar. आपको मजबूत करती है, आपको आजाद करती है अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो। That's right. For young Ambedkar, he thought, I don't need this mother, this second mother bothering me in my household. I will go and make my own life in Bombay in the factory. Now, his brother, older brother, has also done this. So he had one role model for this. But if Ambedkar had actually followed his brother into factory life, we would never have had BabaSaheb Ambedkar. क्योंकि फिर वो पढ़ाई और उसकी दिलचस्पी का मतलब वो उसका फर्क पड़ता है। मैं इस इंटरव्यू के उत्तरार्ध में आ रहा हूँ। कुछ 2-3 सवाल मुझे आपसे और रखने हैं। अंबेडकर और सावरकर के बीच में, हालांकि बहुत कम आया है आपकी किताब में, एक लेटर का बड़ा जिक्र किया जाता है जिसमें अंबेडकर ये लिखते हैं उनको। 1933 का वो खत है, आपकी किताब में दर्ज भी है, जिसे धनंजय खेर जो अंबेडकर के एक बायोग्राफर रहे हैं वो दर्ज करते हैं कि वो सावरकर के जो जाति उन्मूलन के कार्यक्रम है जो वो काला पानी से निकलने के बाद रत्नागिरी की महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कर रहे थे, उनसे बड़े प्रभावित थे। आपकी किताब लिखती है कि ये आधा खत है, हमें इसका पूरा सच जानना है। क्या ये प्रक्रिया थी, क्या ऐसी थी? क्योंकि वो ठीक है कि दूसरे खंड में आएगा, लेकिन पहले खंड में जितना भी उपलब्ध है आप हमारे दर्शकों को बताएं। Yes, so I have reproduced that letter in full. If you can see here, it is 2 pages, right? 2 pages. Now, before this moment, people only were aware of
page 1. And page 1 is nice, pleasant things. Ambedkar says to Savarkar, hello, thank you for writing. I hope you are well. जैसे हम लिखते हैं, I mean, when you always write initially, ऐसे लिखते हैं ना, वो courtesy के तौर पर कि आप ठीक हो, आप अच्छा कर रहे हो, औपचारिकता जी. So Keir, biographer Keir, takes this one page, this courtesy, and says, look how good the relationship is between Ambedkar and Savarkar. He ignores page 2. Now, page 2... दो खत का लेटर है. जी, आप पूरी. If you read page 2, it is Ambedkar's criticism of Savarkar. Very harsh, very specific criticism. That he does not trust him, that Savarkar's words are false, that he is playing games with the lives of the untouchable people, and that Ambedkar hopes that he will become mature and a good man and stop talking nonsense about Chaturvarna, that the caste system should remain, but all castes are equal. तो अंबेडकर सावरकर से ये कह रहे हैं कि ये सब ठीक बात है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चातुर्वर्ण जो सिस्टम है, इसके बारे में भी आपको इसकी आलोचना करने का साहस दिखाना चाहिए. चतुर्वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह के जो 4 वर्णों का विभाजन है, उसके बारे में आपको कहना चाहिए. So for Ambedkar, one must remove this system as a whole. This system is the cause of inequality. It is the cause of oppression. So the system must be removed. यानी जाति जो है वो अत्याचार का और असमानता का जो स्रोत है, इसलिए इसको हटा देना चाहिए. ये अंबेडकर की समझ है जाति को लेकर उनका जो पैमाना है. Yes, but his understanding is that Savarkar is only trying to bring the untouchables into the Hindu community to increase their numbers against the Muslims. So no real concern for the untouchables, their education, their health, their welfare, their jobs, their community and success. No consideration, no concern. अंबेडकर का कहना है कि ये सिर्फ हिंदुओं की संख्या बढ़ सके इसलिए अनटचेबल्स को लाया जा रहा है, यानी कि जो उस वक्त की डिप्रेस क्लासेस हैं, इसमें कोई बहुत ठोस पैमाना नहीं है कि उनकी सामाजिक नीति, उनकी जीवन की जिंदगी, उनके रोजगार, उनकी बाकी सक्षम सुविधाओं, संसाधनों पर, उनके अधिकार पर कुछ प्रयास किया जा रहा हो कठोर. वैसा नहीं है, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि खाना पूर्ति की जा सके और हिंदुओं के फोल्ड में लाया जा सके. ये इनका मत है. That's right. And this attitude, this relationship never improved. It did not in later years. I write only about up to 1932. In later years, there was some more exchange, but it never improved. There was never friendship. There was never agreement. Nothing like this. It is false to claim that they had a good relationship, and that false claim comes from Keir, originating with just showing one side of the story. मैं बिल्कुल आखिरी के सवालों की तरफ आपके पास आ रहा हूँ. अंबेडकर की हमने जाति की समझ को समझा, हमने जाना कि अंबेडकर का बचपन कैसा रहा. बड़ौदा का क्या प्रकरण है जिसकी वजह से अंबेडकर रात में रोते हैं और वो कहते हैं लिखते हुए, और मुझे बड़ा वो दुखद लगा, वो सब पढ़ना बहुत शर्मनाक लगा. अंबेडकर ये लिख रहे हैं कि मैं जब भी इस घटना को याद करता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. क्या घटना है? So Barauda'a state was led by the Maharaja, and the Maharaja had funded Ambedkar's education to go to New York, to go to London. The state of Baroda had taken on a debt of 21,000 rupees to cover Ambedkar's education. So Dr. Ambedkar basically owed to the state, Baroda state, 21,000 rupees. In exchange for this, he could work for the state for a 10-year period. अच्छा, वो एक एग्रीमेंट था कि अगर हम आपको धन देंगे, आपको संसाधन देंगे, आपको पैसा मुहैया कराएंगे कि आप जाके पढ़ सकें, तो 10 बरस तक आपको एक सेवा करनी पड़ेगी, एक मतलब जो उनके डिपार्टमेंट के तौर पर राजा के
राजा की जो दरबार है, जो संसाधन है, उसमें एक डिपार्टमेंट में आपको जॉब करनी पड़ेगी. Exactly. जी. And there's one important thing I think nobody knows. I will tell you. In this agreement, there was also an outfit allowance. Okay? So this is 1913, 1912. Ambedkar is about 24, 25 years old. The outfit allowance comes. आउटफिट अलायंस का मनी, अगर आपने ये एग्रीमेंट पूरा नहीं किया तो आपको ये भरना पड़ेगा. नहीं, वो नहीं. Outfit मतलब कपड़ा. So he's given money for buying suit, for buying a suit. So अच्छा, कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे. Yes. अच्छा, आपकी जिक्र आता है, आपकी किताब में जिक्र आता है. जी. And this is the moment that Ambedkar begins to wear the suit and the tie. Because Ambedkar is always wearing, you see every statue in India, Ambedkar has a suit, jacket, and tie, formal clothes. That started with this Baroda agreement. He was given outfit allowance, money for clothes. So I hope you understand this is a historic moment, because we find that in the fight, for example, between Gandhians and Ambedkarites, sometimes Gandhians say why he does not wear khadi, why he wears this suit and tie. It all goes back to this moment that the Maharaja of Baroda gives him money and says, you buy a suit and you wear that suit to New York City and you get an education. So from that day, for the rest of his life, Ambedkar is wearing this suit, and we see in all of the statues. So Baroda required him to come and work for a period of 10 years. When he returns from London, he goes to fulfill his obligation. But he is a Mahad by caste. And at that time, they called them Pavari. So in the military, a Mahad in the military. This caste is an untouchable. So everyone in the state of Baroda, the administrative service, just say IAS, we would say, all of them refused to interact with Ambedkar. They refused to touch him. They would not give him a file, to throw the file. Even the peon would not give him water. So he was not permitted to touch the इसके बाद भी भेदभाव की कहानी है कि पानी नहीं दिया जाता था, फाइल टच नहीं की जाती थी उनके हाथ की छुई हुई. Nothing. And in addition, when he needed to sleep at night, nobody would give him accommodation. So he could not. रहने की रहवास की जगह नहीं थी उनके. Nothing. बड़ौदा में. No. So he had to pretend that he was a Parsi and go to a Parsi inn. एक सराय में वो पारसी नाम से रहने चले जाते हैं. So in this Parsi inn, the innkeeper knows that Ambedkar is not a Parsi. So he gives him a very bad quarter to sleep in, which has rats, it has bats, it has spiders, and no light, no proper toilet, no running water, nothing. बहुत खराब हालत थी उस सराय की उस वक्त. Absolutely disgusting. And this man, already very educated man, very literate man, very for his years, very wise and knowledgeable, but he's treated like complete beggar. When he was leaving to go to the library, he would like to go to the library as a peaceful place, better than the office where he was treated as untouchable, better than the Parsi guest house where he was put in a bad room. He would go to the library and sit. He was one day leaving for the library. Many Parsis came with sticks and said, we know that you're not a Parsi, and they threatened to beat him. अच्छा, कई लोग आए और फिर उन्होंने इस बात की धमकी दी कि जो क्या पारसी नहीं और हम आप पर हमला करेंगे या आप यहाँ से चले जाएं. तो इस तरह से ये बात पता चली. And they said, you must leave right now, today. He has no house, he has nowhere to sleep, nowhere to stay. He also did not know that
Parsis, who are not Hindus, practice untouchability. So this was a shock. He पारसी had जो कि no, हिंदू नहीं है उसके बावजूद भी वो इस तरह के छुआछूत का या इस तरह स्पृश्यता के जो उसका नियम है उसका वो पालन कर रहे हैं। और फिर exactly. अम्बेडकर आखिर में लिख ही देते हैं खींचकर कि एक हिंदू के लिए जो अस्पृश्य है वो एक पारसी के लिए भी अस्पृश्य है। That's right. And so when he looks back at this time in Baroda, it was complete despair, complete hopelessness. He had nowhere to sleep. Even his friends from his college, he tried to go to their houses in Baroda. They said, no, I'm sorry. I would let you stay, but my servants practice untouchability. तो वो एक ईसाई दोस्त के पास जाते हैं, वो कहता है कि अगर आप मेरे पास आएंगे तो मेरे नौकर जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। और अम्बेडकर इस बात से इसका जवाब का उन्हें अंदाजा लग गया था। Yes. Or they would say, my wife will not allow it, or for whatever reason. He had nowhere to stay. So he had no alternative but to take the train that night back to Bombay. And so this is imagine you're this age, nearing 30 years old. You have educated, you've been assigned as a probationer in the army at a high rank, lieutenant. But when you reach there, you're treated with disrespect. You get no water, you get no work. You're told to sit outside, and then you have no place to sleep, and you have to disguise yourself as another caste or community to find a place to sleep. You're discovered. People threaten you with sticks. You're thrown out onto the street, and this is your life. And he thought 10 years he should live in such a situation. 10 years a slave, 10 years a pariah. So this is why when he thought back, this would bring tears to his eyes. तो इतनी जो अपमान और इतनी जो कितनी पढ़ाई लिखाई, इतनी पद पाने के बावजूद लोगों के दिमाग से जो जाती थी, जो उसकी कुंठा थी, जो उसकी कब्र थी, वो गई नहीं थी, इसलिए अम्बेडकर को इस पर दुख रहा। खैर, हम अम्बेडकर की इन्हीं सीखों के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये महदूद सिर्फ 14 अप्रैल तक नहीं होना चाहिए कि हम अम्बेडकर की तस्वीरों पर, अम्बेडकर के स्टैच्यूज पर जा करके अपना शीश नवाएं। हमें उन्हें पढ़ें, उनका लिखा पढ़ें, उन पर लिखा पढ़ें, अपनी समझ को मांझें, उनकी स्पीचेस को सुने। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो शानदार बहस वो करते हैं, उनका हर एक लिखा और उनका बोला पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। आप देख रहे थे किताब वाला। शुक्रिया आकाश जी, आपने इस इंटरव्यू के लिए, इस बातचीत के लिए समय दिया। इस किताब के बारे में फिर से चर्चा कर लेता हूँ। बिकमिंग बाबा साहेब, बर्थ टू महाड, आकाश सिंह राठौर जी की किताब है और हापर कॉलिन से आई है। कीमत 500 रुपए है, जहां तक मुझे इसकी स्मृति याद आती है। जी, 500 रुपए के आसपास की कीमत है। अमेजन ई कॉमर्स थोड़ी सस्ती मिलेगी। आप भी खूब किताबें पढ़ें। हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए किताबी बातों में, किताबवाला में, जरूर बताएं। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। इट वाज अ लवली एंड प्लेजेंट टॉकिंग टू यू, वेरी एनरिचिंग। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.